So let's continue the the fiscal and monetary policy chapter, and we are into the next topic called neutral rate. The neutral rate of interest is the interest rate that neither encourages nor discourages growth. That is, it's the rate which is like what we say. Not we don't expect it to go higher. We don't expect it to go either lower. Okay, that's a neutral rate of interest, and it is nothing but trend growth plus inflation target. So neutral rate can be equated to this the sum of trend growth. So trend growth is nothing but the trend is showing some growth like for since 4 or 5 years. So what makes you to know that there will be a neutral growth? That means there will be some kind of growth, and inflation would also be you would also set a target to recover the inflation aspect, okay, in that rate. So मैं उसको न्यूट्रल रेट बोल सकता हूं. मतलब अगर मेरा टारगेट ग्रोथ ट्रेंड ग्रोथ मेरा ट्रेंड बताता है कि 5% से ग्रो करेंगे. ट्रेंड कैसे मालूम चलता है आपको? ऑन एन एवरेज. ट्रेंड मतलब एवरेज ही होता है, और इन्फ्लेशन में उसमें 2% ऐड करो तो मुझे न्यूट्रल रेट आ जाएगा. वो न्यूट्रल रेट वो रेट है जिसमें मैं मुझे उतना मिनिमम होना ही चाहिए. उससे ज्यादा कम ठीक है, नो प्रॉब्लम, आई एम इनडिफरेंट टू इट, बट उतना आना चाहिए मुझे. गॉट माय पॉइंट? हेलो हेलो. यस जी. या उससे ज्यादा कम अगर मुझे ज्यादा भी आएगा तो मुझे चलेगा, कम भी आएगा तो चलेगा, बट न्यूट्रल रेट वो रेट है जो समझ लीजिए एक पॉइंट है, एक एक पॉइंट है जिससे ज्यादा कम भी आएगा तो आई विल बी इनडिफरेंट, आई हैव नो इश्यूज, बट इतना तो मुझे मिलना एटलीस्ट, वो मैं सोच के चल रहा हूँ. Expansionary and contractionary policies are evaluated in comparison with the neutral rate of interest. अब सपोज अगर मैं आपको एक बात बोलूं, एक मैं कैश का एग्जांपल लेता हूं. कैश, ओके. आप सोचते हो कि आपके पास हमेशा 1 लाख का कैश होना चाहिए. उसके ऊपर भी हो तो आपको चलेगा, उसके नीचे भी होगा तो आपको कोई उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उतना तो होना चाहिए. सो अगर आप एक अमाउंट फिक्स कर लिए कि इतना तो मुझे मिलना ही चाहिए या होना चाहिए मेरे पास, तो फिर उसके बाद ज्यादा कम होगा तो आपको कैसे रिएक्ट करना, यू विल रियली अंडरस्टैंड. फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव मोर देन 1 लाख कैश, so what I can do is I can invest and come to my 1 lakh limit. If I have less than 1 lakh, I can sell my investments and come to 1 lakh limit. But if I fix a limit, I really know how to act whenever there is a scenario which needs me to take a crucial decision. Okay. So expansionary, that means buying securities when you have excess cash, and contractionary, selling securities when you have less cash, are evaluated in comparison with neutral rate of interest. In my example, I took 1 lakh rupees cash as that. Okay, for example. So 1 lakh को छोड़ के आप रेट के हिसाब से भी उसको अज्यूम कर सकते हो. Inflation shocks, that is deviations from expected inflation. Yes, अब ये shock is nothing but this is something which is again deviation from the adversity. Inflation आना अच्छा नहीं है, फिर उसमें deviation again is inflation shock. ये भी हो सकता है, तो you need to incorporate or consider this also in your policy making. Demand shock, when pressure from increased consumption and investment, is nothing but demand shock मतलब आपका जो डिमांड है उसमें अचानक से डिविएशन आ रहा है, इमीडिएटली आपको ज्यादा कंजम्पशन करना है, ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर आ गया है. ओके. सप्लाई शॉक, सप्लाई में डिविएशंस, इमीडिएटली आप प्राइसेस बढ़ गए तो आप और ज्यादा सप्लाई करना चाहते हो. Monetary authorities should determine the source of inflationary pressure before applying any particular policy. That means they should first see what is the root cause of this inflation, and before making a policy, that's important for them to study about this. So there are some limitations even for the monetary policy. Problems may arise in monetary policy transmission mechanism, like how to implement this. Such channels as asset prices, interest rates, expectations and exchange rates may not be efficient means. That means ये सबके ऊपर ही नहीं, और भी कुछ आपको देखना होता है. A liquidity trap is an example of a problem in transmission. Liquidity trap कब होता है? When market participants hold large cash balances, so changes in the money supply will not affect real activity. तो लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है? जब आपके पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, घर में पड़ा हुआ है. एक्सक्यूज मी.
So limitations of monetary policy, problems में arise in monetary, हाँ तो हमने ये देखा था liquidity trap में क्या होता है, पब्लिक सबके पास बहुत सारा कैश घर में है, तो क्या होता है कैश घर में रहने से changes in money supply will not affect real activity. Yes, why? Because सबके पास कैश पड़ा हुआ है, that is they have put it in their like homes. समझ में आ रहा है? So liquidity trap occurs when market participants hold large cash balances. So changes in money supply, उनके पास पहले से ही कैश है, तो मनी सप्लाई ज्यादा हो या कम हो, that is not going to impact their activity. They can use their own money for whatever use they want. Are you following? Yes. Yes, sir. Yeah. So one policy mechanism is quantitative easing, which is an increase in money supply intended to stimulate the economy. अब देखो क्या होता है कि कोविड-19 सिनेरियो में बहुत लोग का पैसा चले गया, बहुत सारे सेक्टर्स डाउन हो गए बिकॉज उनके पास बिजनेस नहीं है. टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, एविएशन, and these are impacted badly. इनके इम्पैक्ट से दूसरे लोग भी कोई ऐसा नहीं है कि एक्सपोज नहीं हुआ, दूसरे लोग एलिनेटेड नहीं है. The collateral damage has happened to everyone. So to revive the economy from such kind of adversity, the governments have to see that money supply should be intact. यानी जो सेक्टर के पास पैसा भी नहीं है, they are promoting MSMEs, encouraging them to take cheaper loans. लोन्स भी प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट बोला है 5 करोड़ तक का आप उनको हेल्प करो, सपोर्ट करो, नहीं तो वो रिवाइव नहीं होगा. तो एम्प्लॉयमेंट, जो जितने लोगों का एम्प्लॉयमेंट है, सी the students who have cracked who are qualified, people who are qualified, they are blessed. ठीक है, उनका माइंड भी अच्छा है, वो लोग एजुकेटेड भी है. Not everyone is blessed on the earth with the same kind of skills. God सबको एक जैसा नहीं बनाया, but everyone is required for us. Nothing is waste. Okay, so what happens? Those people are dependent on this unorganized sector. ये वो उसमें काम करने चाहिए. So if that sectors are not working, so मुश्किल है. So money supply has to be done so that these sectors can really survive. So quantitative easing can take different forms. Example, purchase of specific securities such as mortgage bonds. तो ये bonds खरीदने से क्या होता, money supply मिलता. Suppose many companies want to many companies want funds. So government या बड़े बड़े organizations वो क्या करते, इनका bonds खरीद लेते. Nothing but the motive is to supply money. That is quantitative easing. And a risk of Q is that if the securities with, अगर ये quantitative easing के चक्कर में अगर ऐसे securities ज़्यादा खरीद रहे हैं हम जिन पे risk ज़्यादा है default का, that means credit risk. Okay, see, anyone would like to go for investment grade bonds, that means which has good ratings. अगर खराब रेटिंग वाला बॉन्ड्स लेंगे तो क्या होगा, डिफॉल्ट रिस्क रहेगा, क्रेडिट रिस्क रहेगा, और ये बड़ा प्रॉब्लम होगा क्वांटिटी ईजिंग है. वी वांटेड टू सपोर्ट द सेक्टर विद बाइंग देयर मॉर्टगेजेस बिकॉज इजीली पीपल आर नॉट रेडी टू बाई. गवर्नमेंट इज डूइंग दैट, बट अगर क्रेडिट वर्थिनेस अच्छा नहीं रहेगा तो वो बॉन्ड्स भी डिफॉल्ट करेगा एंड लॉसेस गवर्नमेंट को होगा फिर से. नाउ fiscal policy. So fiscal policy, you already know, government can increase taxes, decrease taxes. If they want to develop the economy, they will increase the taxes. When everything is all right, people are ready to pay more on taxes, not a problem. India में तो हम जो पे कर रहे हैं वो हम पे तो पता है आपको कितना हमको रिवर्स हमको वो उसका बेनिफिट मिल रहा है. दैट इज अ क्वेश्चन मार्क. abroad में तो they even cry for taxes everywhere, people cry, but they get good facilities. Now at least they should cherish that. So fiscal policy, the objectives of fiscal policy are to influence aggregate demand using such tools as taxes and government spending. तो गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ाएगा तो क्या होगा, डिमांड कम होगा क्योंकि पीपल विल बी पेइंग मोर इन टैक्सेस एंड लेस सेविंग्स. गवर्नमेंट टैक्सेस कम तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी है. इफ गवर्नमेंट इज डिक्रीजिंग टैक्सेस, people will be saving more and they'll be purchasing more. Expansionary policy, that means government spending has to increase that time when government gets less taxes, correct? They will take loans and all from supranational organizations like World Bank.
The effectiveness of fiscal policy depends on particular economy, and there is a debate over whether particular tools are helpful. See, every country has its own economic system, and India का अलग है, US का अलग है, हर जगह अलग-अलग तरीके से काम चलता है. Keynesians believe that fiscal policy is effective in affecting the aggregate demand. Yes. Monetarists believe that fiscal policy effectiveness is only temporary. Government receipts are generally taxes on income and taxes on goods and services. So already we have discussed about this. Budget surplus and debt. So when surplus, a government has surplus, they will take less debt. Government has deficit, they have to go for debt. Government has surplus, like government exceeds, revenue exceeds spending, and deficit when revenues are less than spending. Automatic stabilizers are like self-correcting mechanisms. Example, in a downturn, जब नीचे जा रहा है गवर्नमेंट, मतलब ग्राफ इकोनॉमी का, सरप्लस नहीं है, डेफिसिट है, गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स इंक्रीज, फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, तो गवर्नमेंट को ये सब देना होगा पब्लिक को. ओके, बूमिंग इकोनॉमी में टैक्सेस ज्यादा लेते, तो ये क्या होता, स्टेबिलिटी आ जाता. डाउनटर्न होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देंगे, और तब तो दे देंगे, फिर जब बूम होगा तो आपसे ही पैसा अच्छा खासा ले लेंगे. These stabilizers may exaggerate or exacerbate fiscal policies if not taken into account by government. So the national debt of a country increases with government deficits, and at some point a nation will be considered insolvent. Like many of the nations, the insolvent in making is Pakistan. Okay, very soon. I don't think they are going to bounce back, because they are going in debt trap of China, and very soon they'll be insolvent, because I don't know what policies they have, but like it's not about Indian media, but they have also defaulted on their sovereign bonds, and like there's nothing going well in that economy, and there are many other countries even जो bankrupt हो जाएगा, like Portugal in Europe. Portugal in Europe is also one of the countries. उसके बाद आप देखेंगे तो Greece already bankrupt हो गया, Greece has gone bankrupt, Portugal, and then Spain, then Italy. अभी नंबर है, लाइन से लगे हुए हैं, ये सब इंसॉल्वेंट होने वाला है. They're going to default on debts now, because and this Bangladesh को इतना like economy strong है बोलते हैं, but Bangladesh is a very volatile economy. It is only dependent on garments. 80% of the economy is 80% of economy's GDP is on garments, ready-made garments. अगर वो garments अगर supply cancel कर दिए ना, बड़े बड़े countries अगर buy करना, गया बांग्लादेश का economy, finish. So they should diversify. Issue, concern about national debt. No concern regarding national debt, and national debt as a concern. Much of the nation's debt is owed internally. मतलब government like sells bonds and take money from people. Okay, so they need to repay back to the people. Okay, so like treasury bonds in the United States. No concern regarding national debt. अभी गवर्नमेंट को कुछ परेशानी नहीं है, इट सीम्स. सो सम ऑफ द डेट में हैव बीन इंकर्ड टू फाइनेंस कैपिटल प्रोजेक्ट्स और टू एनहांस ह्यूमन कैपिटल, which should contribute to growth of economy. मतलब government is using the money what they are borrowing from public by issuing bonds to develop people, like to develop the economy, like schools banana, hospitals banana, and schools banane se bacche padhenge, and the literacy would grow, and many skilled people will come up. Skilled people are required in an economy. You can see America, 30 to 40 crores population, all skilled. I think barely थोड़ा बहुत पब्लिक होगा जो उनका खुद का बच्चे लोग हैं, like the skilled people's like children who are not studying, और वो जो उनका प्रॉब्लम है, but migrants they take world class migrants, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. The policy is very strong. Large deficits may encourage, but this Joe Biden is again spoiling America. कोई भी Tom, Dick and Harry जा रहा है, okay, but they get revenue with education even, and they know how to push back people. So large deficits may encourage changes in tax laws. फिर अगेन जब डेफिसिट आएगा तो टैक्स के फॉर्म में हमारे से पैसे खाना शुरू कर दे गवर्नमेंट. प्राइवेट सेक्टर सेविंग में इंक्रीज, क्योंकि गवर्नमेंट अगर हमसे बोरो करेगा, हमारे पास बॉन्ड्स रहेगा, तो फिर इंटरेस्ट पे करेगा, तो हमारा भी लाइक सेविंग्स बढ़ेगा ना बॉस.
And if there Yes, is sir. unemployment, that is not taking funds from like productive users. अनएम्प्लॉयमेंट है तो लाइक क्या फ़ायदा है? डेट इज़ नॉट टेकिंग फंड्स फ्रॉम प्रोडक्ट, मतलब उनको कुछ पैसा वगैरह क्या फ़ायदा होगा अगर मैं मशीनरी लेके आया, बिल्डिंग सब फैक्ट्री लगाया, अनएम्प्लॉयमेंट है तो व्हाट विल आई प्रोड्यूस फ्रॉम दैट इफ़ आई डोंट हैव पीपल टू वर्क? When is this concern? A high debt to GDP ratio may lead to higher taxes and hence disincentives. अगर डेट ज़्यादा हो रहा, आपका जीडीपी से भी ज़्यादा हो रहा, लाइक पाकिस्तान का केस है, देन और टैक्सेस बढ़ता और ज़्यादा आप लोग को इंडिया पब्लिक पे प्रेशर आता. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन गवर्नमेंट में एग्जिस्ट मेकिंग सम पॉलिसीज इनइफेक्टिव. गवर्नमेंट फिर बोरो करेगा बाहर से, ठीक है ना? गवर्नमेंट बोरिंग डाइवर्ट्स फंड्स फ्रॉम मोर प्रोडक्टिव यूजर्स टू एज क्राउडिंग आउट. मतलब गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू स्पेंड ऑन लाइक एरियाज वेयर दे हैव टू स्पेंड. वो इकोनॉमी चलाना मुश्किल हो रहा है उसको. Okay. Fiscal policy tools. Fiscal policy tools include ट्रांसफर पेमेंट सच एज वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी. मतलब जो भी गवर्नमेंट हमसे टैक्सेस लेगा वो हमको ही हमारे वेलफेयर के लिए यूज करेगा. करंट गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, दे विल बाई थिंग्स फॉर पब्लिक. कैपिटल एक्सपेंडिचर, दे विल स्पेंड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर. बुलेट ट्रेन ये वो पूरा बना रहे ना. गवर्नमेंट स्पेंडिंग में भी जस्टिफाइड ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल ग्राउंड्स, क्योंकि गवर्नमेंट इज नॉन फॉर प्रॉफिट. दे आर ऑलवेज फॉर, दे आर हैविंग ए मोटिव टू सर्व their citizens or to see forward for the welfare of their citizen. Okay. And government revenues, taxes, income taxes, indirect taxes, excise duty. जो बाहर से बड़ा बड़ा important कार आता देखो वो रहता 50 lakhs का, गवर्नमेंट उसको 1 crore रुपीज लेता, क्योंकि 50 lakh taxes फ्लैट. तुम्हारा मर्जी, मंगाना है मंगाओ, मत मंगाओ, we will charge. Or else buy Yes, the sir. things which are made in India, because that will be you buy in India, you pay taxes to government, they'll be using it for India. That's what is their motive. Acha India ka system. So you know, I had a student from Africa, Nigeria, and that guy used to tell me, when I bought my first car, it was Ritz actually. No, first car was Wagoner. Then I just shifted to Swift, and I took all mad decisions. Don't buy a car if you don't have any use. Okay, if you have a use, then you buy it, because that is not a good investment. You are a finance student, तो अपना पैसा आप investments में लगाओ. So he said me, तुम इतना छोटा कार ले रहा, ये वो, मेरे पास में Volkswagen का जेटा, ये वो बड़ा बड़ा कार ले रहा. From America they import cars, second hand cars, and there's no duty at all. So that's what strange things. African economies, I don't know why they are doing these things to their people, because they can't produce. India produces. India में आप, Chennai is the Detroit of Asia, you know. Chennai में आपको 10 plants मिलेगा cars का. So that's what good things in India. Yes. Yeah. And taxes generate government revenues and may be used for income redistribution. Of course, अगर taxes से पैसा आएगा तो गवर्नमेंट उससे फैक्ट्रीज बनाएंगे और उससे प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे, डिमांड क्रिएट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लेके आएंगे, उसमें पब्लिक को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इनकम मिलेगा. डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ टैक्स पॉलिसी आर सिंप्लिसिटी, एफिशिएंसी, फेयरनेस एंड रेवेन्यू एफिशिएंसी. तो ये सब जरूरी होता है टैक्स पॉलिसी में. सिंपल होना चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए टैक्सेस कैसे ले रहे हैं, एफिशिएंट होना चाहिए पॉलिसी. that is what is required by a country in all means. हम उनको बना के भेज रहे, प्राइम मिनिस्टर वो बना रहे. फेयरनेस, ऑनेस्ट होना चाहिए, एंड रेवेन्यू आय वैसा बनाना चाहिए, रेवेन्यू के लिए परेशान नहीं होना. फिजिकल पॉलिसी टूल्स. Advantage of fiscal policy tools: indirect taxes can be adjusted quickly, that is like your GST and all, and social policies can be affected quickly using excise taxes, example on tobacco etc. तो टोबैको पे इतना ले रहे हैं, लेकिन वो डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं. आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग. लेना है वो बैन कर देना उसको, हेल्थ का कितना प्रॉब्लम्स है. डिसएडवांटेज ऑफ फिजिकल पॉलिसी टूल्स: डायरेक्ट टैक्सेस आर डिफिकल्ट टू चेंज. यस, डायरेक्ट टैक्सेस एक बार बन गया ना, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, वो मुश्किल है. इनडायरेक्ट टैक्सेस तो वो लोग कभी भी रिवाइव कर सकते हैं. जीएसटी 18% है. नाउ some 5 years back, on a purchase of a flat you need to pay 18% GST. I think no,
18 या 12%, अब 5% कर दिया, so that's a good thing ना। अगर अभी 12% रखेगा तो क्या होगा, 1 करोड़ का फ्लैट का 12 लाख आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, सो दैट विल, डिमांड क्रिएट नहीं कर सकते ना, डिमांड जाएगा। एंड ये केसीआर तो स्टैम्प ड्यूटी भी रेस कर दिया, नाउ 7% इज रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस टू रजिस्टर ए प्रॉपर्टी इन तेलंगाना। आय क्या है कि सर ये लोग तो मतलब दे आर, महाराष्ट्र का इज गुड, they are collecting. they are collecting, no he is collecting on demand, इसको शर्म नहीं है। all these builders and credit, these people told कि कम करो, but in fact he increased and there is no change in the property purchases, people are Yeah, buying, buy. उल्टा न्यू लॉन्चेस में भी वो लोग दे आर इन्वेस्टिंग, गुड। Yes, but actually getting boomed after this. Yes, but Hyderabad market is still affordable, sir. Yes. Mumbai and all तो 2 BHK starts from 2.53 crores, तो उधर पर मुश्किल है। People from those places are investing here. Delhi, Mumbai. Delhi is already Yes, gone sir. case Hyderabad, because Delhi Hyderabad is is the very worst. affordable for us. Where? Hyderabad is very affordable. Yeah, but these people are making it worse now. उन लोग के Yes, वजह से now what is happening, the property rates are going skyrocketing, अब तो afford करना मुश्किल हो रहा है। Yeah, I fear how it will be after 5 years. इधर कैसा होता कि After 5 years we can't afford. Why? Because Mumbai guy who can buy a 2 BHK for 3 crores there, they are what coming will here. तो इधर इन्वेस्ट किया तो उसको विला आ जाता पूरा। आ जाता है उधर वहाँ बोले तो And 6 Delhi तो all those people they want a peaceful place. South India is the best destination for them. मेरा स्टूडेंट है वो बोलता है कि हैदराबाद में इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं दिल्ली के पब्लिक कि दे वांट टू सेटल हियर, अच्छा है बोल के। कैपिटल स्पेंडिंग, टैक्सेस, प्लानिंग, टाइम टू इम्प्लीमेंट विच मेक्स इट स्लो एक्टिंग एंड पॉसिबली इल टाइम टूल। मतलब कैपिटल स्पेंडिंग को कैसे स्पेंड करना है, प्लान करना है, इट्स लाइक वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, सो या दैट्स अ इशू। फिस्कल मल्टीप्लायर, तो हम लोगों ने मनी मल्टीप्लायर देखा, अब फिस्कल मल्टीप्लायर देखते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द प्रोपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम दैट इज स्पेंड ऑन कंजम्पशन। So whenever you come across this word called marginal, that is nothing but for the next additional unit, what additional you are paying, okay, to get the benefit. Marginal का मतलब ही वही होता है। So next unit or the previous unit, between this, what did you pay? What did you shell out? So marginal propensity to consume is the proportion of additional income that is spent on consumption. मतलब आप extra $1 spend कर रहे हैं consume. The complement of the MPC is the marginal propensity to save. मतलब additional unit save करोगे तभी additional units आप spend करोगे, correct, for consumption. MPC determines the effectiveness of fiscal policies that affect income. मतलब क्या होता है कि ये जो कंजम्पशन करना है आपको, इट सोनली डिपेंड्स अपॉन द फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा रहा है तो सेविंग्स कम होगा, सेविंग्स कम होगा तो कंजम्पशन आपका कम हो जाएगा, करेक्ट। नाउ द फिस्कल मल्टीप्लायर इज अ मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ फिस्कल पॉलिसी एंड इज द चेंज इन आउटपुट फॉर अ चेंज इन स्पेंडिंग और टैक्सेशन। मतलब टैक्सेस को चेंज करे तो आपका स्पेंडिंग कैसे चेंज हो रहा। सो फिस्कल मल्टीप्लायर इज 1/1 minus MPC, marginal propensity to consume. We will say that as C, and where C is the marginal propensity to consume, that is between 0 and 1 it seems, with taxes. This is with taxes we are taking. Taxes में आपको क्या करना है, 1 minus T करना है बस। So if government spending increases by the same amount as the increase in taxes, output rises because C is less than 1. What is happening here? Your consumption is less than the ceiling limit, it seems. ये upper bound है, lower bound है, correct? Your consumption lies between the lower bound and upper bound. So if government spending increases by same amount as the increase in taxes, जितना टैक्स लिया उतना ही बढ़ा रहा है स्पेंडिंग भी, तो आउटपुट तो बढ़ेगा ना बॉस, क्योंकि आपका कंजम्पशन टैक्सेस बढ़ाने से कम हो जाएगा, करेक्ट और रॉन्ग? हेलो, yes, yeah. you will not be spending to the maximum extent, you will be spending less than the upper bound, that is the ceiling limit 1, okay, in our example, to understand it more easily. Just a second.
So fiscal multiplier अगर हम देखते हैं example, let us discuss one example. Just a second. So if I say fiscal multiplier के बारे में, अगर like taxes बढ़ाते हैं तो consumption कम होता है, taxes कम होते हैं तो consumption ज्यादा होता है. Let's see, एक छोटा example मैं निकाल रहा हूं. Fiscal multiplier example. एक सेकेंड. So let's say national government enacts a $1 billion fiscal stimulus. मतलब ये एक तरीके से इतना पैकेज दे रहा, स्पेंड करने के लिए देख रहा. And that its consumers marginal propensity to consume is 0.75. Customers who receive $1 billion will save 250 and spend this much. मतलब गवर्नमेंट क्या करा, एक स्टिमुलस पैकेज दिया सर. स्टिमुलस, फिस्कल स्टिमुलस. फिस्कल स्टिमुलस का मतलब गवर्नमेंट हैज कम आउट विद what we say, government has come out with the act. Okay, so they have declared, it seems उन लोगों ने डिक्लेयर किया कि हम आपको $1 बिलियन का एक fiscal stimulus देते. So what is the stimulus? Action by the government to encourage private sector economic activity by engaging in targeted expansionary monetary or fiscal policy. मतलब उन लोग का एक डिसीजन लिए कि हम आपको $1 बिलियन का टैक्सेस का कुछ आपको हम एक आपको कम करेंगे टैक्सेस, मतलब बूस्ट करेंगे इकोनॉमी को. गॉट माय पॉइंट? ओके. हेलो. या आपको हम $1 बिलियन तक का टैक्सेस कम करने का प्लान दे रहे हो. सो व्हाट इज एमपीज, सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पब्लिक का 75% है. तो व्हाट कैन हैपन if they spend this much? Out of this they can save how much? Correct? Hello? Yes, sir. So they will spend $750 million and they will save this much. Okay? And effectively initiating another smaller round of stimulus. The recipients of that 750 million will spend $562.5 million. Okay? So, एक second, sir. हाँ, मैं आपको बताता हूँ अभी. So अभी क्या होता है कि सपोज एग्जाम्पल दैट नेशनल गवर्नमेंट इनैक्ट्स, इतना आपने को बोल दिया है, ठीक है. सेव कट कॉपी पेस्ट दे आर डूइंग. स्क्वेचर पे है क्या ये? सर मैं पता दूसरा एग्जांपल दिया है इसमें. फॉर्मूला है. फॉर्मूला दिया ना उसने. एग्जांपल रैंडमली लाइक नंबर्स दे दिए. कुछ एग्जांपल दिया है क्या? Yes, They have like not quoted government. anything. They have just given numbers. So what is the example they have given? See, government is spending $100. $100. Yes. When the And MPC we is see 80%. So that means 80% is this. Okay. So And we the will be tax spending rate 80 and is 20% will be saving, correct? 25% tax rate, sir.
नहीं नहीं, एक बार मेरे को वो स्क्रीनशॉट भेजेंगे क्या प्लीज? Sure, sir. हाँ मेरे को भेजिए, मैं आप स्काइप पे पोस्ट करिए, उस पे डिस्कस कर लेंगे प्लीज। स्काइप पे पोस्ट करिए, विल डिस्कस। Once posted, please let me know. Answer. Yeah. So, yeah, they have given a very good thing. To understand the calculation of the multiplier effect, consider an increase in government spending. Okay, government is like they want to increase the spending by $100. So, when marginal comes into picture, additional $100 they want to spend. Okay, marginal consumption to propensity to consume is 80%. That means 80%, मतलब एडिशनल यूनिट के लिए हम कितना स्पेंड करेंगे, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, करेक्ट? यस। Yeah. So what did we discuss about the marginal propensity to consume? We discussed proportion of additional income that is spent on consumption. Additional income, what you'll be using for consumption, okay, to buy. So government abhi addition increase in the government spending of $100. MPC is 80 and the tax rate is 25. So the increase in spending increases income by $100. Okay. सर आपका स्पेंडिंग इंक्रीज होना है ना, तो आपका इनकम भी इंक्रीज होना है, करेक्ट और रॉन्ग? Yes, sir. To spend that $100 extra, the government which wants to spend $100 extra should earn $100 more, Yes, sir. or the consumer to spend $100 extra should have $100 more. But what happens when I want $100 more? I only have 75 because 25 has gone for taxes, correct? Yes, So sir. disposable income in my hands is how much? 75. Yes, sir. And with a marginal propensity to consume of 80%, additional spending by those who receive the original $100 is 60. Why? Because you got increment of $100, you paid taxes of 25, the leftover disposable income is 75. Out of that you can spend only 80%, which happens to be 60, correct? Yes, sir. Okay. यहाँ तक क्लियर है ना सर? मेरे को 100 रुपए खर्च करना है, उसके लिए 100 रुपए कमाना है, लेकिन 100 रुपए में 25 टैक्सेस को जाएगा, मेरे को 80% उसका स्पेंड करना है, तो आई कैन स्पेंड 60 ऑफ 60 आउट ऑफ $75, करेक्ट, आफ्टर रिमूविंग टैक्सेस. नाउ दिस एडिशनल स्पेंडिंग विल इंक्रीज अदर्स इनकम बाय 60. ये हमारा जो है स्पेंडिंग सामने वाले को इनकम देगा, लेकिन उसका भी टैक्सेस को चले जाएगा 25, सो ही विल बी लेफ्ट ओवर विथ 45, करेक्ट? Okay. तो 0.75 मल्टीप्लाई क्या? किए, हेलो, 0.75 से क्यों मल्टीप्लाई किए? यू टेक 75. ओके, आप एक काम करो, उसमें 25% कैलकुलेट करके माइनस करो, या 75 डायरेक्टली ले लो. Okay, we are calculating the like okay. Yeah. Now what is happening is
सामने वाले बंदे को 60 मिला, उसका वो टैक्सेस पे कर दिया, 45 बचा, और उसने वो भी स्पेंड करेगा कहीं ना कहीं, तो वो स्पेंड करेगा तो कितना स्पेंड करेगा? 80 ना? 80%. 36, correct? So Yes, sir. because each iteration of this process reduces the amount of additional spending, the effect reaches a limit. Fiscal multiplier defines the potential increase in, मतलब वो ये आपको बताएगा क्या इंक्रीज हो रहा है। टैक्स रेट 25 आप फॉर्मूले में पुट करिए, आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पुट करिए, सब करने के बाद कितना आया आपको? 2.5, करेक्ट? So here with a tax rate of 25% and marginal propensity to consume 80%, the fiscal multiplier is this, and the increase of $100 in government spending has a potential to increase aggregate demand by 250%. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Okay. मतलब ये 2.5 आप $100 से मल्टीप्लाई करिए, जैसे मनी मल्टीप्लायर आप उस टाइम देखे थे कि 20 टाइम्स तक का कैपेसिटी है ना मनी मल्टीप्लायर में, 10 टाइम्स और 20 टाइम्स भी सा। तो अगर यहाँ पर 2.5 ये बताता है, ये फैक्टर ये बताता है कि अगर गवर्नमेंट $100 का स्पेंडिंग अगर इंक्रीज करता है ना इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी में $250 का डिमांड क्रिएट होगा, डिमांड इंक्रीज इन डिमांड होगा। मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग से 2.5 टाइम्स ज्यादा डिमांड क्रिएट होता है। अगर गवर्नमेंट बुलेट ट्रेन लेके आता है, रेलवे स्टेशन बनाता है, कुछ भी बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बनाता है, उसमें $100 स्पेंड करता है, तो इकोनॉमी में $250 का ग्रोथ होता है। $250 का ग्रोथ कैसे होता है? 25% इंक्रीज होता है वो, ठीक है? दैट मीन सॉरी 2.5 टाइम्स इंक्रीज होता है। क्यों भाई? अगर एक ब्रिज बनेगा, डैम बनेगा, रेलवे का ब्रिज बनेगा, कुछ भी बनेगा, आसपास में भी तो लोग वहां पर आके कुछ ना कुछ तो भी बेचेंगे ना बॉस, वो लोग भी अर्न करेंगे, तो टैक्सेस वो लोग भी पे करेंगे, तो सब पे करते करते क्या होगा? गवर्नमेंट को तो मतलब डिमांड तो बढ़ रहा है ना बॉस, Yes. इनकम तो क्रिएट हो रहा ना गवर्नमेंट को बहुत, करेक्ट? Yes. That's it. समझ में आया ना? चलो move forward. Yes, sir. Effectiveness of सर fiscal एक और है सर, बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर, बैलेंस बजट मल्टीप्लायर स्काइप पे दीजिए। चेक करिए। हाँ नेक्स्ट पिक्चर। हाँ हाँ, मैं कर रहा हूँ, मैं उसी में हूँ, स्लाइड में, इसमें नहीं है, नहीं श्वेजर में है। यस सर, आई हैव सेंट यू। आप इसमें भेजिए क्या? यस सर, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट। ऐसा है क्या? I'll send again. हाँ I'll send again. हाँ Sir, I sent you. या In order to balance the budget, the government could increase taxes by $100 to just offset $100 increase in spending. Okay. ज़्यादा स्पेंड करने के लिए इनकम चाहिए, तो वो टैक्सेस के से कलेक्ट करके उसको ऑफसेट करेगा। Changes in taxes also have a magnified effect on aggregate demand. An increase in taxes will decrease disposable income, understood fact. So, and consumption expenditures, of course, and thereby decreasing aggregate demand. The initial decrease in spending from a tax increase of $100 is $100 into marginal propensity to consume $80, ठीक है ना? क्योंकि टैक्सेस के वजह से क्या हो रहा है, आपका स्पेंडिंग कम हो रहा है, करेक्ट हो रहा? Yes sir.
Beyond that, the multiplier effect is the same as we described for the direct increase in government spending and overall decrease in output in aggregate demand for $100 tax is $100 marginal propensity to consume into fiscal multiplier. तो हम लोग ने देखा कि लाइक अगर $100 से टैक्सेस बढ़ता है तो कितने डॉलर से आपका डिमांड इंक्रीज होगा, एग्रीगेट डिमांड? हेलो, Yes, sir. हाउ मच? $80. $200 ना सर यहाँ पर? एक मिनट. Sir, ओके, ऊपर इनटू 250 फिजिकल बोला मल्टीप्लायर था. भी लेना. तो ओके, ठीक है, ठीक है. Yes. Since it is 80% of this, then because of that only it is 200. नहीं तो 250 रहता था. Okay. Ajay, can you come again once, that one? Yes, yes. Why not? Second. हाँ, एक second, sir. This is increase in demand, and this is the what they are saying is the multiplier effect is the same as we described for a direct increase in government spending, and the overall decrease in aggregate demand for $100 tax increase is. अच्छा, ये क्या बोल रहा है बोले तो अगर टैक्सेस इंक्रीज हुआ तो अपन गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से नहीं, कस्टमर के पर्सपेक्टिव से सोच रहे सर. ओके, सी गवर्नमेंट स्पेंडिंग से डिमांड इंक्रीज होता, मतलब गवर्नमेंट को फायदा होता. गवर्नमेंट $250 से, हम लोग इससे पहले क्या देखे थे, हम लोग देखे थे कि here with a tax rate of this and marginal propensity to consume this, the fiscal multiplier is this, and the increase of $100 in government spending has a potential to increase the aggregate demand by $250. मतलब गवर्नमेंट अगर एक्स्ट्रा स्पेंड करता है तो इतना. अभी इधर पर हमारा सिनेरियो चेंज हो रहा है. हम क्या बोल रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ाता है तो हम स्पेंड कम कर सकते हैं. करेक्ट और रॉन्ग? yes, sir. So beyond that, multiplier effect is the same as we described for a direct increase in government spending. The overall decrease in aggregate demand for a $100 tax increase. मतलब टैक्स इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर $100 से. वहां पर क्या बोले थे उसने, $100 से क्या किया था उसने? Spending increase. हाँ नहीं, 80% इंक्रीज इन, ये testing. स्पेंडिंग था. दिस वाज द गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन अस. करेक्ट. गवर्नमेंट अगर $100 हमारे पे इन्वेस्ट करेगा तो $250 का डिमांड क्रिएट होगा. और इधर पर गवर्नमेंट अगर टैक्सेस इंक्रीज करेगा तो हमारा डिमांड डिक्रीज होगा ना. करेक्ट और रॉन्ग? Yes, sir. So with $100 increase in there, $100 spending of government is creating $250 of demand. Here $100 increase in taxes is decreasing the spending by $200. तो यहाँ पर फिर क्या करेगा गवर्नमेंट, हमारे से पैसे लेके इसको इन्वेस्ट करेगा. करेक्ट. So combining the total increase in aggregate demand from $100 increase in government spending with total decrease in aggregate demand from $100 tax, तो दोनों का डिफरेंस कितना? 50. So we can say that the balance budget multiplier is positive. मतलब उधर स्पेंडिंग करके 250 कमाया का डिमांड क्रिएट करा, यहाँ पर टैक्सेस इंक्रीज करके 200 का डिमांड डिक्रीज किया, तो फिर भी गवर्नमेंट के पास 50 एक्स्ट्रा है. करेक्ट और रॉन्ग? Yes. So if instead of $100 tax increase in taxes we increase taxes by 125, तो वो दोनों बैलेंस हो जाएगा सर. मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0. Got it? Yes, Saima? Okay. Yes, sir. अंडरस्टूड. क्या बताया मैंने कि आप 100 बाई मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंक्रीज करो, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन जो भी है उसको फैक्टर को डिवाइड करे तो यू विल गेट 125. अगर आप $100 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं टैक्सेस में तो आपको कितना लाइक स्पेंडिंग कितने से कम हो रहा? 200 से. ठीक है ना? तो वो बोल रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ $100 इंक्रीज इन टैक्सेस अगर हम 125 से इंक्रीज करें तो इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, द इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग बाय $100, द नेट इफेक्ट ऑन एग्रीगेट डिमांड वुड बी 0. क्योंकि प्रोबेबली क्या हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा ना.
आप एक काम करो 125 इंटू 80 इंटू 2.5 करो बॉस। 250. खत्म, फिनिश, जीरो हो जाएगा। और क्या, उतना इंक्रीज करने के लिए बोल रहा वो, ताकि स्पेंडिंग से जो डिमांड क्रिएट हुआ और टैक्सेस इंक्रीज करने से जो डिमांड डिक्रीज हुआ वो बैलेंस हो जाएगा। दैट्स व्हाट आर वी स्टडिंग ना, वी आर स्टडिंग व्हाट, बैलेंस ना। Yes, sir. Got it. दैट्स इट। Now last, let us see effectiveness of fiscal policy. फिजिकल पॉलिसी अगर एक्सपेंशनरी भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शनरी भी हो सकता है। द बजट whether surplus or deficit may not indicate a government's fiscal stance because automatic stabilizers may affect the budget। ये अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ये हो गया है बजट का। मॉनेटरी एंड या Ricardian equivalence भी कुछ है। क्या, Ricardian equivalence मेरे पास वो नहीं है इसमें रिकार्डियन का। और national debt relative to GDP matters। नहीं, सी मेरे स्लाइड में इतना ही टॉपिक है, आपके पास है आप दे दो, मैं करावा देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट भेज रहे क्या? Yes, sir. या थोड़ा और क्लोजली सेंड करो सर, या ओके? नहीं, दैट्स ओके, ऑलराइट, सो आई एम सीइंग। ऊपर है चार्ट, रिकार्डियन। श्वेजर में है क्या? यस सर, दिस इज ट्रेजर। नो, मतलब इसका रिकार्डियन का तो इसमें दिख रहा नहीं कहीं। सर ऊपर के ही थोड़ा, एक सेकेंड, इसमें ये नहीं आ रहा ना। ये नीचे का पार्ट है। नो, दैट्स व्हाट आई एम जस्ट सीइंग टू टेक दिस आउट। आप एक काम करें, ये मेरे को मतलब फिर से एक बार थोड़ा, सिर्फ इतना ही पार्ट भेज दो आप, ठीक है ना? बाकी सब तो हम लोगों ने कवर कर लिया है, इतना सा पार्ट भेज दो। ओके, लेट्स फाइंड आउट दिस स्लाइड। आप जब तक भेजिए, ये अभी ये फिनिश कर देते हैं, लास्ट में वो करेंगे डिस्कस, नो प्रॉब्लम। तो ऑलमोस्ट वो तो हो गया है। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी यूज डिफरेंट चैनल्स टू अफेक्ट द इकोनॉमी बट मे हैव सिमिलर पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स। दोनों का एक ही मोटिव है, डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, दैट इज मेड टू डेवलप द इकोनॉमी।
So these policies may conflict with one another or they may enhance one another. Because अभी जैसे conflict भी होता है कई बार, ज़्यादा interest rates बढ़ा देंगे तो what will happen? Inflation will come in control, okay? And the reason to curb the inflation is to make the economy stronger. अब टैक्सेस ज्यादा लेंगे तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने से भी आपका स्पेंडिंग कम होगा मार्केट में, बिकॉज पीपल विल डाइवर्ट देयर मनी टुवर्ड्स सेविंग्स, ओके? टैक्सेस बढ़ाने से भी आपका स्पेंडिंग कम होगा. तो समटाइम्स दे आर सिमिलर टू ईच अदर, समटाइम्स दे enhance one another, sometimes they will be in conflict, okay? So when can they be in conflict? Any example if you can give? Monetary policy and fiscal policy conflict में कब आएगा? See, reduction in taxes will increase the demand, na? When demand will increase, the inflation will go up, and your monetary policy is to curb the inflation. So दोनों counter हो रहा है, correct or wrong? Please tell me. Yes. सी हमारा मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना होगा. एंड टैक्सेस को साइमल्टेनियसली अगर कम कर देंगे तो लोग स्पेंडिंग ज्यादा करना चाहेंगे. तो दोनों जगह पे भी बैलेंस करना बहुत जरूरी है. स्पेंडिंग ज्यादा करना चाहेंगे तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन ज्यादा होगा. तो फिर मॉनेटरी पॉलिसी आपका टैक्सेस कम करने की वजह से मॉनेटरी पॉलिसी को इंपैक्ट हो रहा है, करेक्ट? सो दे नीड टू सी हाउ टू बैलेंस द एक्ट. गवर्नमेंट को बहुत बड़ा एक चैलेंज है ये. नाउ बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल फॉर मॉनेटरी and fiscal policies to work against each other, there is potential, there's chances. Coordination between the government and the central bank is important. इसीलिए बोलते हैं कि पॉलिसीज आप बनाओ तो आइसोलेशन में मत बनाओ, कोऑर्डिनेशन के साथ बनाओ. एक जगह बैठ के आप देखो कि कहाँ कौन सी पॉलिसीज काउंटर कर रही है. सो ट्राई टू बैलेंस इट. Both types of policies are challenging because of lags in data and the inability to predict the future path of economy. Yes, because future क्या है बोल नहीं सकते. शॉक्स, कोविड-19 जैसा शॉक आ गया तो लाइक हमने डिसाइड किया कि ये रिस्क रहेगा. मतलब there are different types of lag. What? In recession there is lag like that, right? Yeah. डेटा नहीं है हमारे पास, डेटा में कुछ इंफॉर्मेशन की कमी है. An example of interaction is quantitative easing. A potential problem of quantitative easing that when it is used to purchase government debt, fiscal and monetary policy interact. तो इसमें क्या होता है quantitative easing में? What happens in quantitative easing? Yes. Increase in money supply to stimulate the economy. तो अगर मनी सप्लाई इंक्रीज करते हैं इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, तो व्हेन इट इज यूज्ड टू परचेस गवर्नमेंट डेट, मनी सप्लाई अगर ज्यादा हो रहा है तो पब्लिक क्या कर रही है? उसी से गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद रही है. तो क्या होता है फिर? वो मतलब वो उन्हीं के पैसे से वो यहाँ पर गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, उससे फिर पॉलिसी जो भी बना है वो वर्कआउट नहीं होगा, करेक्ट? Yes, now you said something. So Ricardian equivalence, increase in current deficit. गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आया तो टैक्सेस बढ़ाएंगे फ्यूचर में टू मेंटेन देयर प्रिफर्ड पैटर्न ऑफ कंजम्पशन ओवर टाइम. हाँ, उन लोग को पैसा नहीं होगा तो वो लोग स्पेंड क्या करेंगे? तो अब क्या होगा कि अगर गवर्नमेंट के पास डेफिसिट है, सो दैट मीन्स ग्रेटर टैक्सेस इन द फ्यूचर टू मेंटेन देयर प्रिफर्ड पैटर्न ऑफ कंजम्पशन ओवर टाइम. मतलब फ्यूचर में भी हमको पैसा तो जरूरत होगा, तो टैक्स पेयर्स को मालूम है कि आगे जाकर पैसा टैक्सेस बढ़ने वाले हैं, तो दे इंक्रीज देयर करंट सेविंग्स, ओके, एंड दे रिड्यूस देयर करंट कंजम्पशन इन ऑर्डर टू ऑफसेट द एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ हायर फ्यूचर टैक्सेस. कि फ्यूचर में अगर महंगा हो जाएगा तो हमारे पास पैसा होना चाहिए, करेक्ट? सो अभी अपन स्पेंडिंग कम कर रहे हैं, बाद में ज़्यादा कॉस्टली होगा तो ये सेविंग्स से हम उसको रिकवर कर सकते हैं, मतलब वो खरीद सकते हैं. इफ टैक्स पेयर्स
reduce current consumption and increase current saving by just enough to pay the principal and interest on the debt the government issued to fund the increased deficit. तो अब क्या हो रहा है कि if taxpayers reduce, they are not buying more because in future things are going to go costly and they want money for that. So they are saving more for that. So if the taxpayers reduce consumption, reduce current consumption and increase current saving by just enough to repay the principal and interest on the debt the government issued to fund the increased deficit, there is no effect on aggregate demand. So what is that they're saying? अगर हम अभी कंजम्पशन कम करेंगे और सेविंग्स को बढ़ाएंगे, क्यों? क्योंकि फ्यूचर में क्या होने वाला है, चीजें मतलब टैक्सेस इंक्रीज होने वाले हैं, करेक्ट? सो by just enough to repay the principal and interest on the debt, मतलब principal and interest on debt in the sense government is issuing its bonds and taking money from us and they are going to like use that money for the citizens. So if the taxpayers reduce current consumption and increase current saving, how will you increase current saving? By buying bonds of the government, correct? Yes or no? Hello? Yes, sir. See what they are saying is आगे जाके टैक्सेस बढ़ने वाला है, टैक्सेस बढ़ने वाला है तो आप क्या करते, स्पेंडिंग कम करते, सेविंग ज्यादा करते. सेविंग्स कैसे ज्यादा करते? गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदते, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदते तो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स कंपाउंड होकर आपको ज्यादा इंटरेस्ट देते, करेक्ट और रॉन्ग? Yes, sir. तो फिर क्या होता है, टैक्स पेयर्स कंजम्पशन कम करते हैं, सेविंग ज्यादा करते हैं, like by just enough to pay the principal and interest on the debt the government issued to fund the increased deficit. मतलब गवर्नमेंट को डेफिसिट हो रहा ना, तो गवर्नमेंट को डेफिसिट होने से गवर्नमेंट क्या कर रहा है, बॉन्ड्स वगैरह इश्यू करके पैसे ले रहा आपसे, आपसे पैसे लेके क्या कर रहा है, आपसे पैसे लेके आपको प्रिंसिपल इंटरेस्ट गवर्नमेंट वापस करना है, करेक्ट और रॉन्ग? Yeah. तो क्या हो रहा है, इधर पर टैक्सेस बढ़ाने से जो एक्स्ट्रा पैसे ले रहा है वो आपको वापस इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के फॉर्म में दे रहा, देन व्हाट इज दैट? It has no effect on demand. Yeah, right. That's what. So क्या हो रहा है, अगर हम अभी कंजम्पशन कम करते हैं, सेविंग ज्यादा करते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स बाई करते हैं, तो गवर्नमेंट बाद में और सोचते हैं कि बाद में जो टैक्सेस वो बढ़ाएगा तो हमारे पास पैसा चाहिए टू 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 रियली like cope up with those taxes. So government, if they are taking money from you by issuing bonds to you, again they want to repay the bonds to you, the bond money to you with interest and principal. So whatever they are going to increase in taxes, they are paying you that much of amount in form of interest, additional interest, correct? So what is that? That's not going to have any impact on the aggregate demand. Ajay sir, समझ में आया? Yeah, Hello? Jen. Yes, Jen, following. Yes, okay. So yeah, so increase current saving by just enough to pay should, okay, fine. Okay, so let's go for the revision session sir. मैं अभी क्लास खत्म करके आपको कॉल बैक करता हूँ एंड साइमा मैं आपको मैसेज कॉल करता हूँ, आप रेडी रहो, ठीक है? ठीक है, 9:30. Okay, okay, हाँ सर, 9:30 मैक्सिमम सर. यस, ठीक. ओके सर, थैंक यू.